He taught us, soul never die and there is no death. So my soul believes that this event is happening with his divine guidance from above. So I thank you, Patriji, for being with me and many others. And I also introduce the foundation of holistic development. These first ladies can play a vital role in the all-around development of students on the campus. FADAH, the Foundation for Holistic Development, is actively involved in extending our helping hand to the students of border areas like Jammu Kashmir, Ladakh, and JNU states. The Northeast journey of mothers go to the another level, 8 adventurous and successful trip from Delhi to London. It wasn't an easy task for neither of the foundation nor the mothers on wheels out to heal the world to plan, arrange and execute such a mammoth task. FHD traveled on the Silk Route covering more than 20 countries and 23,657 kilometers in 60 days. From 10th of September 2018, conducting meetings with mothers in many places in various countries. From July 2023, a second trip will be commencing to the Southeast Asia, Australia and New Zealand by self-driven cars. The mothers from the 8 countries that we have traveled came to Bharat to understand the concept of Vasudhaiva Kutumbakam and find out the solutions to their local problems. To fill the lacuna created due to various reasons among the mothers of Bharat, the foundation training them for Sanskrit recitation of shlokas and representing the Indian culture. So here now, I request our chief guest, Mr. Indresh Kumar ji, to please come on a dais, and also our beloved author Dena Merriam and the founder for FHD, Madhuri Sahasrabuddhe ma'am, and Mukundji. Hari Om. Shri Ganesaya Namaha, Shri Saraswatyai Namaha, Shri Veda Purusaya Namaha. Om Gadanath Saraswati Ravi Shukra Brahaspati Panchaitam Samsmare Nityam Vedavadi Pravartayet. Hari Om Swasti Na Indro Vrattasarava Swasti Naha Poka Bisava Vedaha Swasti Nastariksho Arishthanemihi Swasti No Brihaspati Dadatu Pradaram Karnebhihi Srenuyama Deva Padaram Pasaye Maksha Virjajataraha Sthirai Rangai Stustova Gungsastanu Beheve Mahi Deva Hitanjadayo. The book written by Dena Merriam, which is known by Science in Hindi, a renowned spiritual leader, author and the social activist. The book is retelling the ancient Hindu epic, the Ramayana, from the perspective of Sita, the wife of Lord Rama. The story of Sita is well known, but Dena Merriam's retelling of the epic provides the new perspective on Sita's story, highlighting her strength, courage, and resilience in the face of adversity. The book challenges the traditional narratives and brings to the forefront of story of Sita, who is often portrayed as a passive and submissive character in the Ramayana. Through Sita's story, Dena Merriam explores the challenges faced by a woman in a patriarchal society, the ways in which they navigate these challenges with grace and dignity. The untold story of Sita also explores the themes of love, dedication, spirituality, and providing the new lens through which view the universal themes. The book is a testament of her vision and commitment to promoting harmony, peace building, and women's empowerment.
So throughout this event, we will hear from experts and practitioners who will share their experiences and insights into the Sitayan program and its impact on empowering women and girls. We hope that this event will inspire all of us to support the initiatives like Sitayan. Once again, welcome to this special event, and we look forward to an inspiring and informative session ahead. So I now would like to introduce more in a detail about the most renowned figure of India. Sri Indresh Kumarji is a visionary leader who has dedicated his life to the service of nation. He is known for his unwavering commitment to promoting the values of unity, diversity, and nationalism. He has played a significant role in the shaping of socio-cultural landscape of India, has been actively involved in various social, educational, and cultural activities. As a staunch believer in the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, Sri Indresh Kumarji has been a strong for promoting peace and harmony among all communities. He firmly believes that the diversity of India's culture is its biggest strength and has been working tirelessly to preserve and promote it. So today we are fortunate to have him with us, our honorable chief guest on this event, to share our stage and enlighten us with his words. So his presence here is a testament to his unwavering commitment to building a better tomorrow for all of us. So without further ado, I invite and request Indresh Kumarji to address the gathering and share his vision for better India. In this memorable program, either on the dais or in front of the dais, respecting and honoring each other, present brothers and sisters, Ramayana is the truth of the world. Mythology can never be a belief of the society. Philosophy becomes the belief of the society. In this respect, when we think it is the only and exceptional history of the world in which no character talks about rights. Everybody talks about the duties. जब जब दुनिया में अधिकार की बात होगी तो कन्फ्लिक्ट आएंगे, जब जब कर्तव्य की बात आएगी तो विकास आएगा, क्योंकि अधिकार आदमी के अहंकार को और हिंसा को जन्म देता है। एक बड़ी विचित्र बात है और वो ये है, जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में थे, एक बार माता कौशल्या ने श्रुत कीर्ति यानी शत्रुघ्न की पत्नी, रात को 3 बजे महल में कौशल्या टहल रही थी तो उन्होंने देखा श्रुत कीर्ति खड़ी है। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए खड़ी हो, शत्रुघ्न कहाँ है? उसने कहा कि मैंने तो कई वर्ष हो गए उसको देखा ही नहीं है। तो थिंक ऑफ द कैरेक्टर्स, जब कैरेक्टर वैल्यूड होते हैं तो वो वर्शिप होते हैं, जब कैरेक्टर रिस्पेक्टेड होते हैं तो वह सिंबल ऑफ कंज्यूमरिज्म बनते हैं। रामायण के कैरेक्टर रिस्पेक्टेड कैरेक्टर नहीं है, वैल्यूड कैरेक्टर है, वर्शिप्ड कैरेक्टर है। तो उन्हें क्यों? इसलिए राम और लक्ष्मण वनवास में हैं
माँ ने जाते हुए लक्ष्मण को कहा कि तुम्हें उनकी रक्षा और सेवा करनी है। इसका अर्थ था कि दिन भर काम करना है और रात को पहरा देना है, तो सोना नहीं है। तो सोना नहीं है तो सोने की वह जो बॉडी का डिमांड है, हु विल फुलफिल इट। तो इसलिए निद्रा देवी ने पूछा था लक्ष्मण से कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन शेयर करेगा, तो उसने कहा उर्मिला करेगी। और इसलिए उर्मिला, उसने निद्रा देवी को बुलाकर कहा कि तुम मुझे लग जाओ, और इसलिए वो पूरे 14 वर्ष जीवित मृतिका के रूप में बिस्तर पर रही। इट इज ए करेक्टर। भरत नंदी गांव में चले गए थे, बट अबाउट शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने कहा जब तीनों ही जंगल में हैं तो हाउ आई कैन बी इन द पैलेस। इसलिए अयोध्या का जो सबसे पहला गेट था उसके बाहर, क्योंकि सारे राज्य का संचालन भरत करेगा, पर महल और कैपिटल सिटी की देखभाल शत्रुघ्न के नाम थी। और आप आश्चर्य करेंगे, शत्रुघ्न एक दिन भी महल में नहीं रहे। जो पहला द्वार था उसके बाहर उसने भी एक खड्डा खोदा और वहीं चटाई लगाई, उसी वलकल वस्त्रों के अंदर वो रहते थे और वही भोजन बनता था। राजमहल से भोजन बनकर नहीं मिलता था। इसलिए श्रुत कीर्ति ने कहा कि मुझे तो वर्षों हो गए, मैंने उसको देखा ही नहीं है। तब कौशल्या को पता लगा कि शत्रुघ्न ऐसे। इसलिए ऑल द फोर nobody enjoyed any rights, everybody is doing their duties। इसलिए रामायण एक आदर्श परिवार भी है और एक आदर्श राज्य व्यवस्था भी है, जिसमें अधिकार की बात नहीं की गई, जिसमें कर्तव्य की ही आचरण किया गया। मैं आपको एक छोटी सी बाई बात कहता हूँ। मैं एक इंटेलेक्चुअल मीट में चंडीगढ़ में था। लगभग 8-10 वाइस चांसलर थे उस कार्यक्रम में, एक्स या प्रेजेंट। 10-12 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस भी थे। 10-12 आर्मी जनरल्स भी थे, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एटसेट्रा, AVM और VM यानी वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल आदि। प्रोफेसर्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे। मैंने कहा थिंक ऑफ भारत एंड थिंक ऑफ द सोसाइटी एंड थिंक ऑफ द कल्चर। दुनिया के हर देश में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, देयर इज ए वन सुप्रीम कोर्ट। फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट हजारों जजेस होते हैं, थाउजेंड्स judges are there. In Bharat is also, but one is an chief justice, most dignified and respected post of the country है। एक 140 करोड़ पीपल में से 1 people becomes the chief justice of भारत, most dignified and respected है। परंतु एक प्रश्न खड़ा होता है, इतनी डिग्निफाइड रिस्पेक्टेड पोस्ट पर भी होने पर भी मैंने और आपने कभी उसका चित्र अपने घर में नहीं लगाया। आप बता दीजिए किसी ने चीफ जस्टिस का फोटो घर में लगाया? वाई? उसके घर में भी है या नहीं है प्रश्न खड़ा होगा। परंतु इतना पक्का है, उसके चाचे ताए के घर में भी फोटो नहीं होगा। बाजार में चीफ जस्टिस का फोटो बिकता नहीं है, समाज में उसका फोटो कोई खरीदता नहीं है। जो इतना डिग्निफाइड एक एग्जाम्पलरी पोस्ट है, मोस्ट रिस्पेक्टेड है, डिग्निफाइड है। आएंगे जाएंगे तो लोग खड़े होंगे।
क्योंकि टू बिकम एन वाइस चांसलर, टू बिकम एन IAS अफसर, सेक्रेटरी, टू बिकम एन जज, ये कंज्यूमरिज्म रिस्पेक्टेड पोस्ट है। इसकी मॉरल वैल्यूज क्या हैं कोई जानता नहीं। अगर मान लो इस सभा के अंदर एक सन्यासी आ जाए और एक चीफ जस्टिस आ जाए, चीफ जस्टिस आया तो सब खुश होंगे, ताली भी बजाएंगे, फूल माला भी डालेंगे, आएंगे तो प्रणाम भी करेंगे। पर आप में से कोई ये नहीं कहने वाला चीफ जस्टिस को, बेटा चल पैर छू, सर इसको आशीर्वाद दीजिए, ये भी जज बन जाएगा। आपको मालूम है वो आशीर्वाद दे ही नहीं सकता, इसलिए आप मांगेंगे नहीं। पर सन्यासी को कहेंगे बेटा पैर छू, महाराज जी सिर पर हाथ रख दीजिए, इसकी अकल ठीक हो जाएगी। इट इज योर फेथ। सन्यासी वैल्यूज वाला जीवन करेक्टर है, चीफ जस्टिस कंज्यूमर वैल्यूज वाला पोस्ट है। इसलिए भारत वह मॉरल वैल्यूज से इंसान बनता है, इसलिए विश्वगुरु था, इसलिए सोने की चिड़िया थे, इसलिए लोग घरों को ताला नहीं लगाते थे, क्योंकि हर एक को दूसरे पर भरोसा था कि ये चोरी नहीं करेगा। और आज घर में आप 2 पति पत्नी रहते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड, एक बच्चा होगा तो दूसरा होगा। घर को ताला है, हर कमरे को ताला है, अलमारी को ताला है। डर किससे है? पहले हमें विश्वास था, वी आर ऑफ बिलीफ, वी आर ऑफ दिस करेक्टर, कि ही इज नॉट थेप, ही वॉन्ट डू एंड ब्रेवरी और ही वॉन्ट डू एंड एनी चोरी, थेफ्ट नहीं करेगा। आज तो घर में पति पत्नी को भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसलिए दोनों छुपा कर रखते हैं एक दूसरे से। व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी हैव लॉस्ट द वैल्यूज, वी आर टॉकिंग ऑफ द राइट्स। सो conflict is there in a person, in a family, in a society, in the nation. Why it is called and the exceptionally a extraordinary good governance rule of the world. राम राज्य के अतिरिक्त you have no other example of the world. It is the only and exception example. और उसकी विशेषता ये थी कि ये था। नाउ डेना मरियम ने सीता को इन्होंने साकार किया है, उसको जाना है और उस पर लिखा है। पर अशोक वाटिका में जो सीता थी वो तो प्रतिछाया थी, क्योंकि असली सीता तो, और सीता को ये वरदान था अगर उसको कोई छूने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा। इसलिए जिस सीता को ये वरदान था वो सीता तो राम के पास थी, प्रतिछाया भेजी थी। परंतु मेरे से किसी ने पूछा था सीता अशोक वाटिका में रहना पसंद क्यों किया? वो जगत जननी थी तो वो रावण को कुछ भी दंड दे सकती थी। मैंने कहा कि सीता वहाँ इसलिए गई थी कि जिस अधर्म का नाश होना है उस अधर्म के नाश में उसको वहाँ पर वो सब चीज़ें संग्रह करनी थी जो उसके नाश के लिए आवश्यक थी। इसलिए आप देखेंगे मंदोदरी द वाइफ ऑफ रावणा बेस्ट फ्रेंड ऑफ सीता थी। इसलिए रावण क्या क्या सोचता है वो मंदोदरी आकर बताती थी। त्रिजटा to change the mind of Sita is allotted a job. But Sita created a relationship that you are my mother, I am your daughter. तो they become mother and daughter. इसलिए जो भी योजना और षड्यंत्र होते थे त्रिजटा बताती थी और वो राम को कन्वे होते थे। विभीषण इज देयर,
तो इसलिए वहाँ रहते हुए जितने रावण के आसपास के लोग थे और उसमें जो थोड़ा सेंटली मेंटेलिटी के थे, all are in touch with Sita and all the information day to day or minute to minute Sita conveys to Rama. और so many friends are there, उनके समर्थक थे सब। और आप देखेंगे अल्टीमेटली व्हेन द लास्ट टाइम कम्स, रावण हैज नो फ्रेंड इन श्रीलंका, सीता हैज ऑल फ्रेंड्स इन श्रीलंका। सीता के साथ सबको सहानुभूति थी और रावण के प्रति किसी को सहानुभूति भी नहीं थी। इसलिए मंदोदरी डांट खाती थी, पिटाई होती थी, तो भी वो सीता के साथ तुम्हारा दुर्व्यवहार अच्छा नहीं है, यही रावण को अंत तक कहती रही। क्योंकि लंका इट इज एन क्लोज्ड सिटी एज चाइना इज नाउ इट इज। यू वोंट हैव एनी ए सिंगल मैन इन द वर्ल्ड जो चाइना को अंदर से जानता और बता सकता हो। All the technologies are available in this period, but China is a closed world country for the world. कोविड से 60 करोड़ आज दुर्दशा में है, पर nobody knows what happens to the scientists and experts, those who created corona. Nobody knows. Everybody think they have been killed. परंतु लगा है, शक है क्या हुआ उनका, क्योंकि वो आज है ही नहीं है। प्रभु को अधर्म खत्म करना था, उसमें झांक सके इसलिए माया रची कि ले जाओ सीता को। साध्वी सीता उनके पास थी, प्रतिछाया सीता रावण के पास थी, और इसलिए लंका जो अवैध किला था वो पूरी तरह से भेद हो गया। इसलिए मिनट टू मिनट ऑल इंफॉर्मेशंस बाय दैट ग्रेट वुमन इट कन्वेड टू द धर्मास, वो धर्म को चली जाती थी। इट इज द ट्रुथ। सीता नेवर एंड राम नेवर। सीता वनवास में रही, राम और जनक का वार्तालाप अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए, जनक मिलने आए थे तो पता लगा कि राम राजा के रूप में राज्य चला रहे हैं, परंतु राम महल के अंदर जमीन पर सोते हैं, बिना गद्दे के सोते हैं, खाली भूमि पर सोते हैं, क्योंकि उनको मालूम था मेरी अर्धांगिनी। इसलिए उन्होंने सीता को डाइवोर्स नहीं दिया। बी केयरफुल। क्योंकि जब प्रश्न आया अश्वमेध यज्ञ का, तो सोने की सीता ही उनके साथ थी, जबकि सारी दुनिया ने जोर लगाया हैव ए नेक्स्ट अनदर मैरिज, पर राम डज नॉट डू इट। तो जनक जब आए महल में सीता के परित्याग के बाद, उन्होंने जब सारा देखा राम का भवन, तो फुल ऑफ सिंप्लिसिटी था, कुछ भी राज्य का भोग वहाँ नहीं था। तब उनको ये ध्यान में आ गया कि सीता जहाँ भी है पूर्ण सुरक्षित है, क्योंकि राम वही जिंदगी जी रहे हैं जो सीता आश्रम में जी रही है। वहां जनक कहते हैं इससे आदर्श पुरुष नहीं हो सकता कोई दुनिया में। तो राम अधिकार के नाते तो जी सकते थे उस सुख को, कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, सब प्रार्थना ही करते थे। 4 भाई 4 की पत्नियां,
आपने कभी सुना नहीं होगा उस हजारों वर्ष के काल में इनमें कभी झगड़ा हुआ, भाइयों में कोई तनाव आया, पत्नियों में तनाव आया, नंद बहू का और इनके कोई झगड़े भगड़े हुए। सो पीसफुल लाइफ, क्योंकि nobody talks of the rights, everybody is dedicated to the duties। इसलिए फैमिली सिस्टम का, जॉइंट फैमिली सिस्टम का निर्विवाद सत्य है, जो विदाउट एनी टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट था, उसको राम परिवार कहते हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि इतना पक्का है डेना मरियम से एक बात हो गई, रीबर्थ इज देयर। सेकंड, रामायण इज एन ट्रुथ। थर्ड, he becomes the example of that truth, logic of that truth। फिर भी ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं ये गड़बड़ है, गलत है। ऐसे लोगों को मेंटल केस मानकर प्रार्थना करनी चाहिए, सद्बुद्धि आए। क्योंकि गुस्सा करके गाली देंगे उनको तो अपनी हानि होगी। कहते हैं जो अत्याचारी है, अन्यायी है, हिंसक है, षड्यंत्रकारी है, उन पर दया करना ही उनको मारना है। उन पर हिंसा करके अपना संतुलन खोना ये अपराध है। क्योंकि हम अपना संतुलन खो दें तो वो शैतान जीत गया। उसको तो एक ही काम था ना, यू शुड लूज योर बैलेंस, you should lose your morality, you should lose your values। तो फिर वो सफल हो जाएगा। तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए सद्बुद्धि आए उनको। ये करेंगे तो बेचारे परेशान और हताश होकर या तो ठीक हो जाएंगे या चले जाएंगे या चुप हो जाएंगे। इन द लास्ट 10-15 years I have talked more than 25 lakh Muslims, not only of this nation but of the world. Approximately more than 2 to 3 lakh Christians of the nation and some other countries. 10 to 15 lakhs Buddhists, either the Mahayani or Theravadi. But one thing we should remember, it is the only land, it is the only society, it is the only culture, it is the only values which respect and accept all the religion and sub-religions of the world. Otherwise we can't take any other name. कोई दूसरा नाम किसी दुनिया के देश का नहीं है। क्या कह सकेंगे कि अमेरिका में हमने चर्च भी स्वीकार किया, मस्जिद भी स्वीकार की, दरगाह भी स्वीकार किया, तौरेत भी स्वीकार किया, हमने सबको स्वीकार किया है और सम्मान दिया है। नो क्रिश्चियन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड which respect all the sub religion of Christianity. No Muslim country is there which respect and accept all the sub-religions of Islam. Islam have a 72-73 sub-religions. Christianity has a 229 religion and sub-religions. In Bharat, all are respected or have given a rights. इतना ब्यूटीफुल कंट्री दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो इस ब्यूटीफुल कंट्री को बनाने के लिए कैरेक्टर ऑफ सीता, मोस्ट इम्पोर्टेंट विजन, लाइट, ब्यूटी, फुल ऑफ कलर्स, एक एग्जाम्पल है। बाय दिस, अब मैंने तो, मुझे सुनने के लिए आप नहीं आए, आज तो हम सुनने के लिए बहन डेना, सिस्टर डेना को सुनने के लिए आए।
We want to listen her. We want to share some things with her. I hope so. The time has started again. The world can be made without war, without riots, without pollution, without untouchability. Respect and adoption for all. The weakest link of the chain is the symbol of strength. इसलिए weakest link उसको रिस्पेक्ट करना और स्ट्रेंथन करना. इसलिए द्वारकाधीश के सिंहासन पर केवल सुदामा बैठे जो अंत में थे समाज के. उसके अतिरिक्त कोई राजा और धनपति, वैज्ञानिक और विद्यावान आदमी नहीं बैठ सका. और राम चलकर गए तो किसी राजा के, महाराजा के पास नहीं गए, किसी वैज्ञानिक के पास नहीं गए, किसी करोड़पति के पास नहीं गए, या वो अहिल्या के पास गए या वो शबरी के पास गए. एक अत्याचार के कारण अंत में खड़ी थी और एक आचरण के कारण अंत में खड़ी थी. तो राम ने मैसेज ये दिया, थिंक ऑफ द वीकेस्ट. तभी वो आदर्श राज्य होगा, तभी वो धर्म राज्य और राम राज्य होगा. इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत स्वागत भी है, बधाई भी है. और इस एक पवित्र और एक महिमामयी, आभामयी कार्यक्रम के लिए मंच संचालनिका को कहूँगा कि वो अपने काम को आगे बढ़ाएं. और जिस बात के लिए हम आए हैं, तो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं. ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला काम मैंने कर दिया. अब जो कंपलसरी सब्जेक्ट वाला काम है उसको किया जाए. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई. Thank you so much, Dena Merriam. Who has traveled so far to come to us to visit the land of India. तालियां, जोरदार तालियों के साथ स्वागत. Now I will request the founder of FHD to facilitate Dena Merriam, Madhuri Sahasrabuddhe. Ma'am will do the facilitation of Dena Merriam. तालियों की आवाज़ आनी चाहिए. ये एक सम्मान का क्षण है एक ऐसे कार्य के लिए जो शायद सुनना, महसूस करना, अनुभव करना, इन सभी चीज़ों से पड़े है. Now I would like to request Indresh ji to facilitate Madhuri ma'am. जोरदार तालियां. Madhuri ma'am is doing the outstanding work representing mothers. Wonderful. Madhuri ma'am traveled in a car from Delhi to London. She covered 27 countries in 60 days. 4 mothers in a car, teaching the motherhood, representing that the mothers are great healers. The most
Thank you very much, all our guests. एक ऐसी एनर्जी को, एक ऐसी प्रेरणा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि डेना मैरियम हमारे इंडिया को हमेशा के लिए याद रखे। राम और सीता के विवाह के समय में पूरे ब्रह्मांड के सभी देवता अवतारी पुरुष आए हुए थे, उनका चित्रण करते हैं। ये एक्सेप्शनल फोटो। ये तो आप डालिए। मैं आज सुबह ही अहमदाबाद बड़ोदरा से आया तो साबरमती के लोग मुझे मिलने आए थे, तो उनका वो सूत का हार ही पहनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत का जोरदार तालियां। अभी ये तालियां और बजेंगी। Again to India, representing another strong character of Rukmini. This is a powerful reminder of the importance of Indian culture and women empowerment. And she is continuing her work to inspire all communities to represent and understand the depth of energy of these powerful characters. जोरदार तालियों के साथ एक ऐसी किताब जो हमें हिलाकर रख देगी। शायद हमने नहीं सोचा होगा कभी कि रुक्मिणी की ज़िंदगी कैसी हो सकती है, या फिर जो हम सीरियल्स में, मूवीज़ में देखते हैं उससे परे क्या हो सकता है। ये सब कुछ आपको डेना मरियम की इन किताबों में मिलेगा। आज हमारे देश में 80 करोड़ हिंदी भाषी लोग हैं जिनको हिंदी किताबों की बहुत ज़रूरत है, और अभी ये ज्ञान हिंदी पुस्तक के माध्यम से उपलब्ध है। Namaskar. I want to thank all the organizers, Madhuri-ji and Indrash-ji. But it wasn't until I took a pilgrimage. I've done many pilgrimages in India. I come to India quite often, and I've gone to many of the places, Kedarnath, Badrinath, Gangotri. I'm always doing some pilgrimage. But I was organizing a conference in Ayodhya on the theme of Dharma about 5-6 years ago, when I decided to go visit Ayodhya. And so a few of us who were in the conference, we took the train to Ayodhya. I wasn't expecting anything special, except, of course, it was the birthplace of Kingdom of Ram. But as soon as I stepped off the train, I was in another time period. And as I walked the streets and visited the places, I only had a day there. And as I was writing, I came home right after that and really secluded myself and was writing what I was seeing and hearing. I consider myself to be a scribe. I write what I see and I hear. But I knew I was in the presence of Sita because the messages that I was receiving changed me, transformed me. I'm not the same person as I was before I wrote the book. The ecological messages that came to me about, because it was Treta Yuga,
So I got to see, peer into the Treta Yuga, what life was like before humanity began so filled with, before the idea, the concept of separation, where there was much more integration into the whole. We saw ourselves as part of the whole, not these separate entities that needed to assert ourselves. That developed over time. But Treta Yuga was before that sense of rights, as Indrashri said. Rights, the idea of my and mine, and I have these rights, and I can take from nature what I want because I'm a superior being. Those thoughts did not exist at that time. And what Sita and Ram could see was that Ravan, who was a great being but had fallen into this illusion, very destructive delusion, was seeding negative thoughts into the collective. And it was a downward movement of Treta Yuga descending, which means there was a loss of spiritual knowledge coming in the future. We were descending into a less enlightened age. And so these elevated thoughts of Dharma, had to be seeded into the collective to carry us through until we entered an ascending arc, which we are now in. So we now can leave behind some of those Kali Yuga mindsets that have been so harmful. And so there were a lot of thoughts, messages that came through about the inner work. The outer story is told. My interest has always been the inner story. What was going back on the subtle planes? Narayan and Narayani came to earth for multiple purposes. Sita, Narayani, was a designer of the whole thing, not a victim, a designer. She created because it was not only to seed these dharmic thoughts into the collective so that a dharmic civilization could emerge, but also to save their beloved devotee who had fallen into such delusion. So that's how I began this journey with Sita, which is not over. It's an unending journey. नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मंच पे विराजमान मेरे मार्गदर्शक, गुरु, मेंटर इंद्रेश कुमार जी, respected Dena Merriam ji, who had brought in front of us another side of Ramayana, that is Sitayana, and Madhuri ji, Sahasra Buddha, who had taken lots of efforts in organizing this event, and all dignitaries on the dais, of the dais. I am born and brought up in Pune. Last year, the person who translated Sitayan into Marathi, he met me in one of my friend's office, and we were discussing on Sitayana. He gave me one copy. I read it within a couple of days. And during that time, I realized, because in 1983, I got admission into one of the prestigious colleges in Pune, that is Government College of Engineering. It is one of the popular college, equivalent to one of the IITs, some of the IITs. And on the back of the mind, I got relaxed. I will be engineer. आज नहीं तो कल इंजीनियर बन जाऊंगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी. But from 1984, I got involved into the Ram Janmabhoomi Andolan from the Tala Kholo Andolan. I was in Ayodhya during Shilanyas period for 2 months. And during those days, during Shila Pujan days, Maharashtra government had done a very notorious thing. Maharashtra government has published the rough notes of Dr. Babasaheb Ambedkar in the form of riddles in Ramayana Krishna. Those riddles, they were brought forward during the Ram Janmabhoomi movement by the Maharashtra government in a notorious way, just to keep the speed of Ram Janmabhoomi Andolan, just to damage the Ram Janmabhoomi Andolan speed. Maharashtra government had done that. And we used to have a very tough time to give answers to those riddles.
I do remember one event. There was one Shila Pujan event in one of the hostel in our college. It was Ambedkar hostel. I should not mention the other aspects, but it was in Ambedkar hostel. And everybody was asking n number of questions about this, that, everything. Last time, I just convinced them by saying 2-3 words, 2-3 sentences to them. You see, I am black. Many of us are black. Even Ramji is black, Shivji is black, Shyamji is black. Let us contribute to this Ram Janma movement through that angle. Whatever the answers are required for the riddles in Rama and Krishna, those will be answered on one day. We will search for those answers. And everybody got involved in the Ram Janma Bhoomi, that Shila Pujan and everything. But when I read Sitayan, what Shashikant Joshi ji, who translated it into Marathi, I got all those answers. I was so excited. I told him the tagline of Sitayan should be the valid and correct answers to the riddles in Rama. He accepted that. Then he interacted me with Dena ji, and I spoke with Dena ji. She also accepted that tagline or that angle, and she gave us free hand to market or to go to the masses with this tagline. I am fully aware of the fact next year there will be a Lokarpan of Ram Janma Bhoomi Mandir, and during that period again these riddles in Rama will come up, and Sita will be the valid and perfect answers to those riddles. I wish, and I will strive for that, to take these answers to each and every house in India, to each and every corner in India. I am really thankful to Dena ji and everybody for arranging this event and supporting all of us. Dhanyavad, thank you. Thank you, Mukund ji, for your wonderful experience. और मुझे लगता है अभी भी हमारी भूख कम नहीं हुई है, and we would like to hear more from Dena. So for this, we have a lot of questions where Madhuri ma'am specially will represent that from our side, because she read the book and she was highly impressed after reading that book, and she has a list of questions. So let us enjoy this discussion between Madhuri ji and Dena ji to understand more about what she really written in the book. Once I read Denaji's book, I came to know, yes. But even then, there are few questions which rose in my mind, and I am taking the opportunity of this dais to ask Denaji the questions so that whatever is in my mind, it will be pacified, and you will also get, I think, the benefit out of it. So first question, Denaji, it is, where did you find this new Sita? She appeared to me. People often ask me how, and I don't really have an answer. I've been a long-time meditator. I do a lot of meditation, and I find the answers to most of my problems through meditation. And I also find myself sometimes going back in time into my own past history in my meditations. And then I was very surprised when Patraji called me and said he had found the book and wanted to share it. And I said, please do. If there are those who resonate with my experience of Sita, please share it. I learned a lot. As I said before, I was transformed. I felt that Sita is continually teaching me. And one of the things I wanted to say is that Sita is a living presence, as is Ram. And she is very active today, individually in our lives and collectively. And we have to start thinking of Ram and Sita, and of course all the devatas, as being active on the world scene. We can't see what's going on behind the visible world, but also in our lives. There are many instances where
karma is dissolved through aligning oneself with the energy of Sita, seeking her guidance. If that's the one message that can come through, is that she is an active presence and can guide us through all of our difficulties. Thank you. So, the main motto of our meditation, so if we look within, I think, we will also someday will get Rama or Sita or Shiva or Shakti. So let us start searching. Second question to you. What motivated you to sketch Sita in this book as a cool environmentalist? She may have been the first environmentalist. Sita, the thing that came through to me was Sita's love. And love is not an emotion, it's a state of being. And at that high level, love just pours out of one. Her love for the animal world, her love for the plant life, and there are many instances in the book where she guides the animal world and the plant life. And she's very perceptive. The river, she calls the river her daughter because she saw the deities in the river. And I remember the time when she was a child and one of the ox had fallen into the river and drowned. She goes to the river and scolds her. But the goddess rises up and says, this is what the ox did, it was his time to move on. Seeing the whole continuum of life, looking at the bigger picture, I mean, we have to step back and look at all of life as being part of us and being interconnected. And when we rise into that state of love, then we become like Sita, and we can pour that love into everything and everybody who comes our way. So nice. And really, Sita, in this book, if you are not read, please purchase a book and read. We have heard till now that because of Sita, all the things happened. Sita was not courageous. Sita was very scared of, and that is why she started shouting when Ravana took her and all these things. And because of that, only all these things happened. Will you please elaborate? Because once we read the book, we got a message that Sita was not scared of anything. She was a very courageous lady. So, will you please elaborate that point? Will you please throw the light on how she is a courageous lady? There's nothing in this universe that could have frightened Narayani, Sita. She was the Supreme Mother, and she willingly went into Lanka to do the work that needed to be done. Ram did the outer work, and she did the inner work. And when she was in Lanka, she had to go into all the hell realms of Ravana's mind to find him, to reach him, to touch his soul. And she did. She went through all those dark realms that he was inhabiting in order to counter him. Her battle, she had a battle with Ravan that was every bit as difficult as the outer battle. And that's where she and Ram worked hand in hand, him on the outer field, her on the inner field. And in total balance and partnership. The partnership between Ram and Sita, to me, was so beautiful and is a model for us today because every step they took was in unison. I mean, I believe she knew that she had to go into Lanka, but hid it from Ram so that he would not try to stop her. That was her courage. She knew that she had to go in, and she had to go in alone. But she took it on willingly because in order to not only save their beloved devotee who had fallen into delusion, but to spare the world the torment that Ravana was inflicting on the world. That had to be done. And she took it up willingly. And when she retreats to the forest to connect with the animals and the plant life, to give them that before they had to come back and rule the kingdom. So nice, so nice. Really, this courage, even now also, हम भी इस ज़माने में देखते हैं कि ये करेज कहीं ना कहीं हमारे अंदर में भी बहुत कम होता जा रहा है. सीता का जो करेज दिखाया है इस किताब में, वो बुराई के साथ मन की लड़ाई. घर में अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं, माँ ने खाना बना करके रखा है, बोला है गुलाब जामुन को हाथ नहीं लगाना, हाँ, फिर भी हम लोग जा करके चुपके से उसमें से एक गुलाब जामुन लेकर के खा लेते हैं. फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स. बाकी तो करप्शन, ये तो छोटी सी बात मैंने बताई, इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है.
बाकी दुनिया में कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपना मन का कंट्रोल आपा खो जाते हैं, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो बाकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच में हो, या अन्य अन्य अपने बिहेवियर के बारे में, एंगर के बारे में हो। सीता ने रावण के साथ जाने का डिसीजन इसीलिए लिया, ये किताब में लिखा है देना जी ने, ताकि रावण के मन के अंदर की जो कालीमा थी, जो बुरे विचार थे, वो नष्ट करना बहुत ज़रूरी था। अगर वो नष्ट नहीं किया होता तो हो सकता था कि नया जन्म जो रावण का हो जाएगा, क्योंकि जब तक बुराई पूरी नहीं होती, ख़त्म नहीं हो जाती, उसको मोक्ष नहीं मिलना था। मोक्ष नहीं मिलेगा तो वो जो जय करके बाहर आया था, जय विजय में से जय था वो जो आया था उसको वहाँ पर जाना मुश्किल होता था। तो उसकी बुराई कैसे ख़त्म होगी? राम तो शरीर से उसका वध करेगा, लेकिन मन की बुराई कैसे ख़त्म होगी? और इसीलिए सीता ने और राम ने, जो देना जी ने बोला, यूनिसन में सोच विचार करके सीता ने ले लिया कि मैं जाऊंगी अंदर और मैं उसके अंदर तक जा करके, अंदर तक जाना माने उसके पास में रहना है, और उसके आसपास का सारा जो मन का जहाँ पर उसका है उसके अंदर जा करके वहाँ से वो निगेटिविटी जो है वो बाहर लानी है। और ये करेज जो दिखाता है ये बहुत बड़ा करेज है, और इसीलिए ये कभी पॉइंट हमारे सामने में, हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स है उसमें कहीं लिखा नहीं है। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि इन आवर स्क्रिप्चर्स दीज थिंग्स आर नॉट रिटन। इट्स नाउ टाइम, आई थिंक दोज हु नो संस्कृत, प्लीज start writing new Sita in Sanskrit, so that in the future we will proudly say that yes, along with this one is also one more Sita. Read this also. A mother and a daughter duo is attacked by few gundas while going to the ashram, and for personal vigilance those gundas, they physically attack that lady, that girl especially. And Shri Rama says to Sita at that time, we could not stop Ravana from creating new destructive ideas. That is after, I think, Ravana's death. Sita was with Lavakusha in the forest. That time this incident has happened. And Ram came to meet Sita and he told that we could not stop Ravana to create such type of negativities, destructive ideas and spreading them among the society, like controlling Mother Nature, controlling the women folk. These are the signs of future dark era, that is Kali Yuga, which we are facing. And when I read this, immediately Nirbhaya case came into my mind actually. Or like Nirbhaya, there are many cases. They came in front of my eyes actually. And that is why I wanted to ask her this question. But if we create good thoughts and set example in front of the society now, these good thoughts will also grow in dark era to negate the negativity and dark era, and will create the positive force to eradicate negativity or darkness from the society. That is what is mentioned in the book. I want that, Dena ji, if you throw a little bit light on this type of... That's a very important point, because we are all part of the collective, and our thoughts add either to the light or to the darkness. And when you see all of the negative energy being put into the collective, the violence in the media reflects itself, violence in society. You have people who are writing about the future as a dystopian future. Well, we should not let these people take control. We are creating the future. We are the creators. We create our personal future through our choices that we make. And the more conscious we are, the more consciously we create our personal future, and we are part of the collective. And so the more we can put in thoughts of love, of care, of compassion, care for each other, care for the natural world, the more that builds a positive collective. And so Indrashri mentioned responsibility. That's a concept that's been lost in the modern world, our responsibility. Our responsibility in society, our responsibility to the collective, not just by our actions, but our thoughts. Are we bringing more love into the world? Are we bringing more care and compassion? Every day we have thoughts that go through our mind. Every day we act in a way that either harms or hurts the environment. And so I think to begin to live more consciously
and to ensure that we're adding to the light and not to the darkness. That's one of the messages I got from this book, because Sita and Ram were continually bringing light into the collective, countering all the darkness that Ravana, and we have Ravanas in the world today, other scoundrels who are creating divisions and conflict and degradation of the planet. That dark force is an ongoing story. And it's a continual battle between the Devas and the Asuras. That story is an eternal one. And so what role are we going to play in that story? Are we going to strengthen the force of the Devas, the Devatas, and bring more light into the world? It's something we all need to reflect on and think about our own responsibility toward bringing more light into the world. One more, while reading the book, one point I found it very interesting. That is the similarity between the First Lady concept. Generally, First Lady concept we understand in USA. The President's wife is First Lady. The same thing is in our armed forces also. The First Lady is Commander's wife is of that commanding station and all. The same concept I found in the book, though it is not written there, First Lady or something like that, but it is narrated in the book that Sita's behavior, the story, if you read the book, you will come to know the references, whatever I am giving. When the tigress came to to Sita for solace, and she avoided her for 3 days, making her realize that that she has done some mistake. And then she takes action, she console her, and then went to the village and visit the house whose son is killed by that tigress. But while going there, though she was staying in the forest, very simple life, just valkal means plain clothes. But while going there, she took out the Rani's clothes, queen's clothes, completely adorned like a Rani, and then went there. So will you please? She was representing the kingdom, and one of the qualities that the Maharani cared, representing the Maharaja as well, cared about what happened in that little forest village that a boy was killed accidentally, through this misunderstanding between the animal kingdom and the human kingdom. And she was very concerned that this separation between the human and animal worlds was growing. And she was trying to embed love for the animal kingdom in humanity, in that collective. But she wanted that family to see that she was coming as the Maharani. She was coming in that role to show the display of care from the royal family. And that was an important message, because that's what we wish for today. We wish that all of our leaders truly put our welfare, the welfare of each one of the citizens, as the highest goal. That's the model that we aspire for. That's what we want to bring back. That kind of Dharma king. So, do we need to tell them, do we need to go and inform them their rights, not rights, duties? I think that it depends on the consciousness. And, sometimes you have a president and first lady who really do care. And at other times they're there for the power or for more selfish reasons. So I think it varies greatly. And of course, some first ladies do a lot of humanitarian work, and they go to places that are troubled, and they do that. But the quality of love shown by Sita was of a totally different nature. And I think is something to aspire for. I'd like to read just a closing paragraph from the book. This is. The book is told through the story of a servant working in Janak Baba's household. She comes with Sita to Ayodhya, and then she dies, and she's reborn in Ayodhya. And
is searching for what really happened to Sita. She died before Sita returned, and she couldn't believe the story of Lanka. So she finds the aged attendant of Sita, Soma, and she travels to see her. And it's Soma who tells her much of the story. But at the end, after they've been together a few days, she said about Ram and Sita, they are near and dear, and they care for each one of us as if we were their child, because in fact, we are. I have come to know Mata, that's what she called Sita, and Sri Ram much better since their departure from this physical world. Departure is not accurate. It is not the correct term, because they never left. Yeah. But our language is so limited. Mata once told me that words will never replace the way we used to converse through images, through thought. Now we are reduced to words. Mata and Sri Ram are as active today as ever. When she was before me in her physical form, that is what I saw. That is what I knew. That was who she was to me. Now I see the reality of who she is, of what both of them are, and I see their hand in everything that transpires in this world. आप भी आइए और जिनको आप बुलाना चाहें आपको अनुमति है. आप इनविटेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं 5, 10, 20, 50 लोगों में. भारत के एक एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हुए डॉक्टर इकबाल दुरानी. कुछ लोग होंगे जिन्होंने फिल्म देखते होंगे तो उनको जरूर नाम ध्यान में आ जाएगा. 4-5 वर्ष पूर्व उनके अंदर का नया इंसान जागा, इसलिए थोड़ा फिल्म जगत से अलग करके उन्होंने संस्कृत पढ़ी, फिर अरबी भी पढ़ी और अल्टीमेटली उनमें एक इमोशनल लव कमिटमेंट डेवलप हुआ और सामवेद एक घटना में से उन्होंने चुना, क्योंकि सामवेद विश्व की जितनी भी कलाएं हैं उनके उद्भव की भूमि है. उसका ज्ञान और विज्ञान उसमें है. वो खेल कूद की हो, नृत्य की हो, संगीत की हो, वेशभूषाओं की हो, जितनी भी हैं, और उसकी इतनी विविधता है उसके अंदर कि आज धरती पर उतनी विविधताएं होने के बाद भी सामवेद उससे अधिक विविधता को बताता है. तो ऐसा नहीं है केवल भारत को बताता है, यानी पूरे विश्व को, सृष्टि को बताता है. और उन्होंने फैसला किया इसका हिंदी और उर्दू अनुवाद करूँगा. जब हिंदी और उर्दू अनुवाद करने लगे तो फिर एक और उनके दिमाग में कमिटमेंट जागी कि हर पृष्ठ जो मंत्र का, श्लोक का भावार्थ है उसको पिक्चराइज करूँगा. तो इसलिए हर पृष्ठ पिक्चराइज्ड होगा. तो दुनिया के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं किसी भी धर्म के, उसमें पहला ग्रंथ होगा जो 100% पिक्चराइज्ड होगा और उसके ऊपर संस्कृत का. फिर वो देश के बड़े बड़े मूर्धन्य लोगों को मिले, बाबा रामदेव जी को भी मिले, श्री श्री रविशंकर जी को भी मिले, ज्ञानानंद जी को भी मिले, अवधेशानंद जी को भी मिले, और भी. तो उनके मन में एक बात आ गई इसका लोकार्पण आज के भारत को और कल के भारत को जो बनना है उसके लिए ज़रूरी है कि आरएसएस के चीफ उसका लोकार्पण करें. इसको खोजते खोजते वो मेरे पास आए. जो लोगों ने उनको रास्ता बताया उसमें से आए. हमने उनका स्वागत किया. जो भी कहानी का शुरुआत है और अंत ये बना
17 मार्च दिल्ली में दोपहर को 3 बजे उस सामवेद का हिंदी उर्दू अनुवाद इसका लोकार्पण होगा। स्थान तय हो जाएगा, तो इसलिए इट विल बी गिवन टू द पब्लिक। तो बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ उसका पब्लिशिंग होगा और वो जनता के लिए आएगा। तो आप सबको निमंत्रण है उस कार्यक्रम में रहने के लिए। केवल स्थान अभी रह गया है, 1-2 दिन में पक्का हो जाएगा। इच्छा है रामलीला जो लाल किला है उसके बाहर के मैदान में उस कार्यक्रम को करना। तो जो भी ऑडियंस आएगी वो डिस्टिंग्विश्ड होगी। नहीं तो फिर एक झंझट बना रहेगा। सब कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम्स आर देयर, पर साथ ही अगर रिक्शा चलाने वाला एमए है, वो कहता है अरे एमए है और रिक्शा चलाएगा, इसका मतलब रिक्शा चलाने वाला अनपढ़ ही चाहिए फिर भारत में। ग्रेजुएट है सब्जी बेचेगा, अरे ग्रेजुएट होकर सब्जी बेचता है, इसका मतलब सब्जी बेचने वाला अनपढ़ ही होना चाहिए। तो ये दुविधा नहीं चलनी चाहिए। अगर सब कर्म अच्छे हैं, सब्जी बेचने वाले के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। झाड़ू लगाने वाले घर में ना हो और कपड़े धोने वाला और पोंछा लगाने वाला, तो हमारी फैमिली लाइफ नहीं चल सकती। फिर उस कर्म को ये मानना ये हीन है। बेसिक प्रॉब्लम इज दिस। एजुकेशन फॉर ऑल के लिए चाहिए, वर्क इज वर्शिप। केवल बोलने के लिए नहीं, इन प्रैक्टिस चाहिए। तो ऐसे सामवेद का ये लोकार्पण होगा। तो आप जिन जिन को सूचना देना चाहते हैं, निमंत्रण देना चाहते हैं, यू आर अलाउड, आप दे सकते हैं। क्योंकि स्थान तय होने के बाद उसका निमंत्रण आ जाएगा। अभी तो स्थान नहीं है, ऐसा निमंत्रण मैंने आपको दे दिया है। तो इसलिए दिल्ली में होगा ये पक्का है, 17 मार्च को होगा ये पक्का है। आरएसएस पूज्य सरसंघ चालक मान्य मोहन जी उसमें रहेंगे। अनेक और भी अलग अलग धर्मों की डिग्निटरीज रहेंगी। और फिर सामवेद फॉर द डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, पीस, लव, ब्रदरहुडनेस इन ऑल, इस रूप में वो मिशन बनाकर काम करेंगे लोग। तो इसलिए एक इतिहास के नए पृष्ठ का जन्म होगा। आगे क्या क्या होगा इस फिल्म में मालूम नहीं है, पर बहुत कुछ होगा। और इसलिए देश में एक मूवमेंट चल पड़ा और दुनिया में, नो योर रूट्स, अपनी जड़ों को जानिए। तो फिर हिंदुस्तान और दुनिया में हर एक के बाप दादा का जब नाम लिखेंगे तो कोई 100 साल पहले, कोई 500 साल पहले, कोई 5000 साल पहले, हम सब के बुजुर्ग एक ही निकल आएंगे। और इट इज़ द ओनली ट्रूथ। यही एक सच भी है। फिर वो रेवरेंट हो के रामलाल हो के रहमुल्दीन, नो प्रॉब्लम। तो दुनिया को इस ओर जाना है एक बार तो, और हमने ऐसी दुनिया देखने के बाद जाना है। तो मैंने आपको निमंत्रण एक्सटेंड कर दिया। थैंक यू। तो अब आगे कार्यक्रम जो है आज का संपन्न कर लिया जाए। आप में से बहुत लोगों की इच्छा होगी कि फोटोग्राफी बहन के साथ होनी चाहिए, तो आप अलाउड हैं, कर सकते हैं। हम समूह की फ़ोटो भी कर सकते हैं और अपने इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। उसके पहले वोट ऑफ थैंक्स को देते हैं। हाँ, वो वोट ऑफ थैंक्स तो देना ही है। वो थैंक्स लिए बिना जाओगे तो इनजस्टिस हो जाएगा। और थैंक्स लेने के बाद चाय भी जरूर पी कर जाना है। वो नहीं पिएंगे तो फिर वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा। A very good evening to all.
heartfelt gratitude to our esteemed chief guest for today, our mentor and guide, Shri Indresh Ji, for the generosity of time and words shown to us and being the part of this path-breaking event today. Sir, your thoughts have really inspired us. Thank you very much, sir. Sitayan, celebrating the journey of Sita, and Rukmani. These two books are work of passion. We are honored to have here today Dena Merriam ji, a renowned international interfaith leader and founder of Global Peace Initiative for Women. Ma'am, your work is bringing a shift in consciousness toward climate, gender, and other critical issues. We feel privileged to be with you today and are really inspired. I myself had decided that I will read both the book. I'll accept that I have not read till now, but today I have decided I'll read both the book and recommend to all my friends. I'm deeply touched with your words, ma'am. Deeply touched. Thank you very much. We are extremely grateful to Mukund Tirveji for gracing the occasion and enlightening us with the wisdom of words. And this vote of thanks will not be complete without mentioning our beloved Madhuri Tai, the chairman FSD, and a ground level worker, a social reformer. We are really fortunate to be with you and work with you. Thank you, ma'am. Thank you, Tai. We cannot call ma'am to her. She says we should always call her Tai. Thank you, ma'am. Thank you, Tai, actually. We would also like to express our gratitude to sponsors and supporters who have generously contributed to the success of this event. Without your support, we would have not been able to organize this event. Special thanks to the organizing partner, JNU team, IK's division of MOE, MB Publishing House, Himalayan Parivar, Muslim Rashtriya Manch, Project Yug Parivartan, PSSM, and last but not the least, Foundation for Holistic Development for planning, organizing, and hosting such a wonderful event. Thanks as well to all the participants who have joined us today in this auditorium and who are connected with us online. And without your participation, this event would have not been a success. Thank you very much to be with us today. Finally, thanks to the organizing committee. Your support through the process meant a lot. And I cannot say more about it, but without your support and continuous meetings, and I cannot take name of all the people who were involved. Neha was there, and yes, Pallavi is there, Rita is there, many people are there. I cannot take name of all the people, but everyone who has given their time for this program, I'm really thankful. And once again, thanks everyone, and I request all of you to join for the high tea out of this auditorium with us. Thank you very much.